Now the next one is isosceles triangle can be converted into a rectangle by dissection in a simpler way. Can you find out how to do it? So here in this case we would be looking at visually कि कैसे हम करने वाले हैं. So you can start again with an isosceles triangle. ठीक है, आप क्या करोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले बनाओगे और उसका मतलब क्या होता है कि इसकी दोनों साइड्स इक्वल है. लेट्स से ABC इज देयर, तो AB इज इक्विवेलेंट टू AC. दैट्स व्हाट वी नो हियर. ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, ट्राई टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप टू द बेस एज आई हैव ड्रॉन. लेट्स से AD हियर. ठीक है, बिकॉज द ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल, इसका मतलब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो चुके हैं, this one and this one. So here what I would do is I would take the right piece and rotate it here. I would try to bring it near B. ठीक है, इस वाले को. The second piece I would be cutting off. ADC काट के ना हम क्या करेंगे, I would just join it with ABD on the left side of it. यहाँ पे हम इसको join कर देंगे. It would form a rectangle for you. So what's that here? It would be C here. ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो चुका है, रेक्टेंगल फॉर्म हो चुका है, and it is having 90-degree angles at the corners of it. So that's how you have to do it using the dissection method.